Hello learners, today I welcome you all in this program in which we are going to discuss about the topic central problem of an economy, that is the part of your economics at senior secondary level. So what we see there, have a look on this screen, what you will find, what you see. A picture is over here attached in this PPT, and you see three types of question marks have been given: what to produce, how to produce, and for whom to produce. Okay, now what do you think? क्या आता है आपकी समझ में, क्या समझते हैं? Why these questions have been given in this picture? As you know, the term economy is a type of system in which what we see, where living is earned by each and every individual, each and every sector, each and every firms to meet their needs and requirements. It's okay? Now, for this purpose, क्या हमारे देश के जितने भी लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, डिफरेंट सेक्टर्स हैं, डिफरेंट फर्म्स हैं, डिफरेंट इंडस्ट्रीज हैं, उनके ऑनर क्या इतना सफिशिएंट अर्निंग कर पाते हैं जिससे कि उनका सारे नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स जो है उनके पूरे हो जाएं? अगर ऐसा है तो देन व्हाई दिस क्वेश्चन अराइजेस, isn't it? So to understand, we have to come across the generalized way of thinking about the problems in an economy. And you see, one thing must, it is also written central problem of an economy. Okay, now let us come to the first heading, first part of the heading, that is problems. Why do problems arise? Question is there. See, in your common way of living, in your day-to-day life, that you want to have something, to purchase something, to obtain something, but you are not able to obtain that particular thing for which you have imagined to have, isn't it? Okay, so in such a situation, what happens? You feel discomforts. Your wants and requirements are not fulfilled, not satisfied. Why? Have you ever thought about in this particular point? आप अपनी ज़रूरतों की पूर्ति नहीं कर पाते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते हैं, क्या कभी आपने विचार किया? Obviously किया, but in formal language it is not known to you. In the terms of concept, this is not known to you. आप जब भी किसी चीज़ की इच्छा करते हैं, चाहत रखते हैं, तो क्या होता है? उसको पाने की कोशिश करते हैं, but you find that you are not able. So it indicates the terminology that is known as resources. It means that कि आपके पास रिसोर्स है नहीं कि अपने उस वांट्स को, उस डिजायर को फुलफिल कर सकें.
then what happens? The problems arise. Okay, it is the outcome of that situation for which you have to and we have to be aware about. Okay, because you see the applicability of the concept in our day-to-day life. What we feel, what we observe, what we do, what activities are performed to fulfill that desire, isn't it? For which we have to earn living. So the system comes in the way that economy is the system through which the various types of livings are earned by an individual, by different sectors, by industry, and by each and every segment of the economy to fulfill the needs and desires. Okay? Next, you see. And the other part of the heading is the entire world is divided into different types and kinds of economy. Some of the economies are of capitalist economy, socialist economy, mixed economy, developed economy, underdeveloped economy, developing economy. But right now you have to keep in your mind the so why not to put this process into developing economy? It will give the sense of progressive nature of that particular economy to utilize their resources for the purpose of meeting the needs and requirements of the human being. Okay? You see, now the relevance of the questions. What to produce, how to produce, for whom to produce, which we will discuss later on in this chapter. Okay? So, I will elaborate the different classification of the problems which an economy or the whole economy of the world are facing in their day-to-day activities. Come to the next point. See, what are the various objectives of the today's discussion? Previously we discussed about the concept of the heading, that is central problem of an economy or central problems of economy, isn't it? But what are the various objectives behind this topic? See, the first objective is talking about the identification of different types of problems which arises in an economy, and we identify the different reasons why these problems arise in an economy. Okay? Now next to this, the classification of the types of problems. किस तरह की प्रॉब्लम्स जो है कि इकोनॉमी फेस करती है, एक अर्थव्यवस्था सामना करती है, उसके डिफरेंट क्लासिफिकेशन को देखेंगे. ओके, कैसे हम उन प्रॉब्लम्स का वर्गीकरण करेंगे, डिफरेंट कैटेगरीज में डालकर इसकी स्टडी करेंगे तो हमें कुछ ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में अच्छी तरह से वो समझ आएंगे. Understand the concept of production possibility curve. See, what is the concept behind PPC? Production possibility curve.
which will be discussed in detail later on. You see just objectives of the topic. Explain the concept of opportunity cost and its relevance in the today's economic development of a country. What it talks about? Opportunity cost. See, right now, whenever you go through the study of economics, you cannot deny the fact and concept of opportunity cost to have the better understanding of the concept. So it indicates the universality of the concept of opportunity cost. And last one is describe the central problem of an economy with the help of production possibility curve. In what way these problems are related to this PPC curve? How we can study the problems in a graphical mode, in a tabular mode, and understand the basic concept of the economy. Okay, let us move further. Next to this, why do economic problems arise? ये आर्थिक समस्याएं क्यों arise होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं? What are the reasons behind these problems? See, if we study about all these reasons, then it will have a long list for that. But to summarize the concept, what we see, the broader areas through which these problems arise. What are these broader areas? Unlimited wants. You see, you take the example of an individual, you will find that an individual might be having any kind of desires, that is real life desire or imaginary. Okay? See, आपको डिजायर करना है, एक व्यक्ति को अर्थव्यवस्था के अंदर अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, उसकी इच्छा होती है, तो कैसे उसे फुलफिल करेंगे और वो किस तरह से हम उसकी प्राप्ति के लिए एक्टिविटीज करेंगे, ये एक ड्राइविंग फोर्स के रूप में काम करता है एक इंडिविजुअल के लिए, एक व्यक्ति के लिए. द फर्स्ट रीजन इज अनलिमिटेड वांट्स, डिजायर. समटाइम्स यू माइट बी हर्ड अबाउट द term desire. Now, desire is what? वो एक काल्पनिक कंसेप्ट है, अवधारणा है. बट वांट्स क्या है? वांट्स signifies the availability of the resources which you people are going to spend on the desire which you want to get it fulfilled with your available resources. So that is why wants has been taken into consideration in place of desire, because wants signifies the relationship between the available resources and desire. Once desire is fulfilled, then it converts into wants. Next to this, limited resources. What does it mean? See, you might be heard about the different types of example from your grandmother, grandfather, from your
मदर, फादर, अरे हमारे टाइम तो ऐसा हुआ करता था, हाँ, ये चीजें हमें आसानी से मिल जाती थी, हमारी ये सारी जरूरतें पूरी हो जाती थी। ठीक है, अब क्यों नहीं हो रही है? अब क्या प्रॉब्लम है कि वो जरूरतें फुलफिल नहीं हो रही हैं? कहां पे प्रॉब्लम आ गई, कहां दिक्कत आ गई? बिकॉज वी हैव बीन गिवन द limited resources as a gift of nature. You see how and in what way? Sometimes in the form of materials and sometimes in the form of other way. You see, the human beings are rational, that is also the gift of nature. And by the passage of time, the human beings are skilled and efficient enough to grow the available resources. सीमित साधन उपलब्ध है और हमारी वांट्स क्या है? असीमित है, unlimited है. So see, if the two ends are coming at common platform, अगर वो दो चीजें एक कॉमन प्लेटफॉर्म पे आती हैं तो एक दूसरे के साथ मैचिंग नहीं होगा. नहीं, क्यों? बिकॉज what we see, unlimited wants and limited desires. Okay, so then that is why the problems arise. Concept is clear? चले आगे. इस तरह से हमने क्या देखा कि इन दोनों के बारे में एक अच्छी समझ हो जाए तो हमें ये इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स के बारे में एक अच्छी कंसेप्ट बन जाती हैं जो यूनिवर्सल इन नेचर है. बट लेट अस discuss about the one more reason that is the most effective and important also, that is alternative use of resources. See, being a rational person is considered as the resource, human resource, human capital, because all depends upon the thinking and ability and activity performed by an individual. So alternative use of the resources, what we have seen that we have limited resources, then we have to identify the way through which the priority of needs and requirements, priority of the utilization of resources through which we can be able to unfulfilled desires, unfulfilled wants. Now you might be asking, आपको ये लग सकता है कि कैसे समझें इसको. मेरे लिए एक एग्जाम्पल जो है बहुत जरूरी है समझने के लिए. यू सी, इन योर हाउस होल्ड अफेयर्स आप डेली उन चीजों को देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं. क्या है वो? यूज ऑफ मिल्क एट योर होम. You know, in some way or the other, milk is considered to be the complete food for a person, for an individual, from a newborn baby up to the oldest people of the family. But what we see,
our resources do not allow us to purchase the large amount of milk. And the likings of the people, individual members in that particular household differ from person to person. In such a situation, how to utilize that milk? You see, some people prefer to have tea, some people prefer to have coffee, curd, dahi, drinking milk, some prefer to have paneer, some sweets, like that. But what we see, the only limited amount of milk has been purchased in a family. Then how to fulfill that desire? Either to utilize your available resources to purchase more of that particular amount of milk. But what happens? Most of the people are not in position to afford the expenses, more expenses on the purchase of milk. See, then what happens? First, the priorities are fixed. If the small children are there in the house, now milk is quite needed for their drinking. If the old people are there in the family, they strongly prefer to have tea and coffee. So what we see that we fix up the priorities of utilization of the milk depending upon individual in that particular household. And we distribute the available milk on the basis of the priorities of individual in household. Is it okay? Now got the point? You see, that is applicable, universal in nature. That is applicable each and every segment and sectors of the economy. Now you might be asking the question like that. नहीं, अमेरिका तो एक डेवलप्ड कंट्री है, अमेरिका एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, बहुत सारे ऐसे इकोनॉमी हैं जो डेवलप्ड हैं, विकसित हैं और कैपिटलिस्ट इकोनॉमी है, उनको क्या ज़रूरत है किसी चीज़ की? वो अपने सारी ज़रूरतें फुलफिल कर ले रहे हैं. बट यू सी, still developed countries of the world are also facing the same economic problem. You see the example these days in America. Rate of inflation has changed the way of living of the people in America. Why? Why problems arises? क्यों हो रहा है ऐसा? क्यों क्राइसिस आती हैं? Why Russia is facing a lot of crisis? Why China is not performing well? Why England is facing economic problem? You see, these are the developed economy. No. That is why the economic problems are related to each and every segment of the economy, each and every type of economy. That is why this type of concept is called central problem, that is universal in nature, which you might have seen on the heading of the topic. Okay? So let us take a small break, learners. After the break, we will start the remaining topic for better understanding of the concept of economic problems. Okay.
प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। कभी पढ़े हम कहीं पढ़े, वे विषय की लोच से युक्त हो। मित्रों हम उठे और जागे, मंजिल आने की ध्वनि सुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने। राष्ट्रीय मुक्त विद्यालय का है द्वार खुला सबकी खातिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। शिक्षा परीक्षा का अवसर एक बार ही क्यों मिलता फिर। दुनिया में इसके केंद्र बात, कोई मन चाहा केंद्र चुने। हम अपना दीपक स्वयं बने, हम अपना रास्ता स्वयं चुने। कोई मन चाहा केंद्र चुने। स्वयं बने, हम Hello learners. Let me start the rest of the topic after the break, and we will see the further how we can be able to see the different classification of the economic problem and what type of problems comes in the way. Concept is quite clear to you. What are the various regions? These are unlimited wants, limited resources, and alternative use of resources. Okay, so keep in your mind, these three pillars will make you aware the concept of economic problems and apply in your day-to-day life. You see the benefit of study economics because it is the most applicable subject through which you can find its application in your day-to-day example. Okay, let us move further. We see the types of central problems. Central problems are categorized in three parts. What are these? Allocation of resources, growth of resources, and optimum utilization of resources. You see, allocation of resources, what does it mean? Distribution of the available resources. Okay?
कौन सा रिसोर्सेज हमें किस जगह, किसके लिए और कैसे यूज करना है, हम इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं. तो अंडर द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज वी विल स्टडी अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर डिफरेंट पर्पसेस. सेकेंड इज growth of resources, which I told you earlier in the regions that resources are available to us in a limited amount. It means that कि हम चाह के भी उसको बढ़ा नहीं सकते. But here we can see the growth of resources. कैसे उस अवेलेबल रिसोर्सेज को हम अपने कमिंग नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को, जो फ्यूचर में नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स क्रिएट होगी, उसको हम फुलफिल करेंगे. यू सी द डेवलपमेंट प्रोसेस ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन इन मेट्रो सिटीज. नाउ यू मूव टू द मेट्रो सिटीज एंड यू फाइंड that metro rails trains are available, and in a very short time duration, short span of time, you can move from one place to other. Earlier it was very difficult to move from one place to other. Particularly, you take example in Delhi, you see in Kolkata, in Hyderabad, in Mumbai, in so many places. What you see? This shows the growth of resources. चीजें हमारे पास थी available, but we did not know how to utilize all these things. But you see, the rational behavior and thinking of the human being has compelled to adopt the process of growth of resources to meet their fast changing way of living. Okay? Next to this, optimum utilization of resources. हमें इसका भी ख्याल रखना है कि जो अवेलेबल रिसोर्सेज हमारे पास है, क्या उसमें से कुछ चीज अधूरा तो नहीं रह गया? क्या उन रिसोर्सेज को हम पूरी तरह से यूटिलाइज कर पाए या नहीं? तो इस तरह से हम इसको जानने की कोशिश करेंगे अंडर द डिफरेंट क्लासिफिकेशन दैट हाउ एंड इन व्हाट वे दीज अवेलेबल रिसोर्सेज और व्हाट वी से दैट विल बी यूटिलाइज्ड. ग्रोथ ऑफ रिसोर्सेज कैसे होगा और कैसे हम इसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन कर पाएंगे, दैट इज ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज. सो अगेन व्हाट वी सी, द एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज हैज बीन फर्दर क्लासिफाइड इनटू 3 पार्ट्स. व्हाट आर दिस? व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर whom to produce. Now you see the decision making process of an economy, that कैसे हम अवेलेबल रिसोर्सेज का प्रॉपर यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. व्हाट टू प्रोड्यूस, हमारे इकोनॉमी की जरूरत क्या है, हम क्या प्रोड्यूस करें. हाउ टू प्रोड्यूस, इट इंडिकेट्स अबाउट द टेक्नोलॉजी ऑफ द इकोनॉमी available in the economy. What to produce talks about the priorities, decision making process, what to produce, what is needed at what time. You see, and the third one is for whom to produce. किसके लिए प्रोड्यूस करें, क्या प्रोड्यूस करें, क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया जाए एंड किसके लिए उत्पादन किया जाए. That has been already mentioned in the beginning of the heading of the PPT. What to produce, how to produce, for whom to produce. Let us come to the first classification,
that is allocation of resources and different parts of the classification. The first one is, you see, अच्छी तरह रिकॉल करने के लिए हमने इसे फिर एक डिजाइन में डाला है कि एक पिरामिड की तरह है जो डिफरेंट पार्ट्स पे इसके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट को दिखाता है. व्हाट टू प्रोड्यूस, द फर्स्ट स्टेप. हाउ टू प्रोड्यूस, द सेकेंड स्टेप. एंड यू सी कि once it is decided, then this triangle becomes bigger in size. And for whom to produce, you see the base of the triangle. See the movement of the decision making process. Let us discuss about first what to produce in what quantity. The first classification under allocation of resources. What to produce and in what quantity. What it talks about, which I have already discussed with so many examples and so many things. Now you see, limited resources, allocation of the resources. See the conceptual steps of understanding economic problem. Limited resources, allocation of resources, that is decision making. हमारे पास सीमित साधन है, संसाधन है, हमें वहां पे अपने निर्णय के हिसाब से प्रायोरिटी बेसिस पर वस्तुओं का उत्पादन करना है. जो हमारी नीड्स है, जो हमारी रिक्वायरमेंट है एट प्रेजेंट, हम वर्तमान की जरूरतों को पूरी करें, ना कि प्रेजेंट को हम गैप करके फ्यूचर के बारे में सोचें. वंस the present needs and requirements are fulfilled, then we move for further future needs and requirements. Isn't it? And then the different parts of that decision making process, that what to produce, how to produce, for whom to produce. Now the biggest and the toughest task for an economy to adopt this decision making process. अपने रिसोर्स का के यूटिलाइजेशन का सही निर्णय लेना, ये एक मुश्किल काम है. बट यू सी, एंड दिस ऑल्सो इंडिकेट्स द डिग्री ऑफ डेवलपमेंट of different economy. Once decision making process is okay, then there is no way to make economic development of that particular economy, that particular country. This is also creates obstacle and problems are created. अगर हमारी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस सही हो, हमें अपने रिसोर्सेज के बारे में मालूम हो, रिसोर्सेज do not allow us to fulfill those needs and requirements for which we are not able to use the available resources. क्लियर? अच्छी तरह समझ आ रही है बात? इसको ऐसे समझने की कोशिश करेंगे तो बड़े ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में आपको ये कंसेप्ट जो है समझ आएगा. और ये एक बेसिक चीजें हैं, इकोनॉमिक्स को समझने का एक बेसिक कंसेप्ट है. उसके बाद आपको इकोनॉमिक्स मुश्किल नहीं लगेगा. एंड फॉर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू ऑल्सो
आप अच्छी तरह से परफॉर्म कर पाएंगे। चलिए, लेट अस मूव फर्दर। इट टॉक्स अबाउट द प्रॉब्लम्स ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, which I have already explained to you. Problem of choice and decision making process, and how to allocate the available resources for production. ये जो डिसीजन मेकिंग प्रोसेस होगा ये किसके लिए होगा? गुड्स एंड सर्विसेज की प्रोडक्शन के लिए होगा, जो आपके नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल करेगा। ठीक है? अगेन द क्वेश्चंस आर कमिंग इन द वे दैट प्रॉब्लम ऑफ चॉइस एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस, हाउ टू एलोकेट अवेलेबल रिसोर्सेस। इस हेडिंग के अंदर हम लोग इस बात पे फोकस करेंगे, इसको हम एग्जाम्पल से सपोर्ट करेंगे, जिससे कि आपको ये कॉम्प्रिहेंसिव वे में समझ में आए। देखिए आगे, सी I know you might be smiling and laughing to see this example. How? In what way? Gun and butter. How, then you might be asking the question कि यहाँ पे डिसीजन मेकिंग प्रोसेस कैसे इन्वॉल्व है, हम कैसे डिसीजन लें रिसोर्सेज एलोकेट करने का? ये तो सिंपल, एक गन है, ये बटर है, बट इट हैज अ वेरी बिग एक्सप्लेनेशन ऑफ द यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। हाउ? In what way? You see, once the situation of the economy is facing a war-like situation, the neighboring countries are attacking on India to acquire India for their own purposes, because they know it very well that India has natural gift in abundance, बहुत ज़्यादा पर्याप्त मात्रा में है, and we have technology to utilize that abundant resources. So they might be adopting the attacking mode, आक्रामक mode, to utilize these available resources for their own purposes. Now in that situation, what रिसोर्स को खाने पीने की चीज़ों को प्रोडक्शन में लगा दें? छोड़ो, लड़ाइयाँ हो रही है तो हो रही हैं। अरे खाने पीने की चीज़ें प्रोड्यूस करो, हमें क्या करना? लड़ाइयाँ हो रही है, हो रही। नो, हियर इज द नीड फॉर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। The first step of the government is to divert all the resources towards the production of guns. Gun यहाँ पर symbolic है, learners. यहाँ एक symbolic indication है. It means that कि अभी हमारे देश की सुरक्षा की जरूरत है. We need security from the attacking of the neighboring countries of the world, India. हमें चाइना से बचना है, हमें पाकिस्तान से बचना है, हमें अफगानिस्तान से बचना है, हमें बांग्लादेश से बचना है, हमें श्रीलंका से बचाव करना है। ये सब हमारे क्या हैं? नेबरिंग कंट्रीज। हमें वर्मा से बचाव करना है, हमें तिब्बत से भी बचाव करना है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि अभी हमारी प्रायोरिटी क्या है? कंट्री की सुरक्षा। एंड सी द अपोजिट टू दिस, इफ देयर इज नो अटैक, वी आर लिविंग अ पीसफुल
we are spending our peaceful way of living. ठीक है, अच्छी तरह से शांति के माहौल में हम जी रहे हैं, एक अच्छे वातावरण में जी रहे हैं, जहां पर हमारे रिसोर्सेज का ग्रोथ होगा, अच्छी तरह से हम उसका यूटिलाइजेशन कर पाएंगे. In that situation, the economy should focus on the production of butter, just to maintain the highest standard of living. यहां पर बटर भी एक सिंबॉलिक है, क्योंकि खाने पीने की चीजें कब अच्छी लगती हैं? जब हमारे माइंड में पीस हो, शांति हो, कहीं से किसी अटैक का भय नहीं हो, हमें यह डर नहीं लगे कि हम आने वाले समय में दूसरों के गुलाम होकर जिएंगे. In that situation, the entire resources must be diverted towards producing food items, good items, जिससे कि हमें खुशी मिले, जिससे हमें बेसिक नीड्स हमारे फुलफिल हो, रोटी, कपड़ा और मकान. तो यू सी कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस plays a very pivotal and important role for the development of an economy, isn't it? And once decision making process is in right way, then economy is not supposed to facing any type of problem, any type of central problem, that is what to produce. Is that clear? Let us move further. The next category is how to produce. कैसे प्रोड्यूस करें? What it talks about? It indicates the basic concept of utilization of technology, through which the resources are utilized for the production of goods and services in an economy. You see, so the technology are categorized in two categories. First is labor intensive technology, the second is capital intensive technology. अच्छा, इस क्रम में मैं एक क्वेश्चन ही पूछता हूं. दो टाइप के टेक्नोलॉजी हैं जो अभी मैंने आपसे शेयर किया. अगर इंडिया को डिसीजन लेना है या टेक्नोलॉजी यूटिलाइज करना है, तो व्हाट टाइप ऑफ टेक्नोलॉजी इंडिया प्रेफर्स टू यूटिलाइज in the country? Might be answering like labor intensive technology. I also consider that some of you might be answering like that, the capital intensive technology. Okay, let us see on the basis of logic, on the basis of explanation and analysis, that what is the best suited technology for the economy. The best suited technology for the economy is labor intensive technology. Why? What is the reason behind this? Let us identify the reason. चलिए इसी क्रम में एक और क्वेश्चन है like this, कि पॉपुलेशन के टर्म में इंडिया की रैंक क्या है पूरी वर्ल्ड में? क्या होगा आपका आंसर? योर आंसर विल बी लाइक सेकेंड रैंक, जस्ट आफ्टर चाइना. You see,
हाईली पॉपुलेटेड कंट्री है। ओके, रीजन बीइंग, अब इसकी बहुत डिटेल में नहीं जाएंगे, बट सम ट्रेडिशनल वे हैज टेकन अ वेरी विकराल रूप कि हर इंडिविजुअल की शादी होनी है, हर इंडिविजुअल के बच्चे होने हैं, एक बच्चे नहीं कई बच्चे चाहिए। ठीक है, दैट इज अ लैक ऑफ रैशनैलिटी एंड एजुकेशन। कुछ सामाजिक बंधन है, अगर शादी नहीं हो रही है तो लोग उसको जो है या नहीं कर रहा है कोई बंदा तो उसको अलग तरीके से देखते हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि पॉपुलेशन बढ़ेगा एंड क्लाइमेटिक रीजन्स आर आल्सो देयर। इन सच ए सिचुएशन इट इज अ वेरी रैशनल डिसीजन ऑफ द इकोनॉमी टू यूटिलाइज लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन, but it does not mean that the capital intensive technique of production will not be utilized, because the capital intensive techniques opens the way of development. You see, and labor intensive techniques creates only developing economy. But again you might be asking about a question like China is highly populated, but it is a kind of developed economy. See, so that is why for India itself we should not prefer the one type of technique of production with the available resources of the economy. It means that a balanced approach has to be adopted, because कि अगर लेबर इंटेंसिव हम यूटिलाइज नहीं करेंगे तो अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएंगे। ओके, अगर हम कैपिटल टेक्निक्स ऑफ प्रोडक्शन को नहीं अडॉप्ट करेंगे तो हम डेवलपमेंट के दौर में पीछे रह जाएंगे। सो व्हाट विल बी द सुटेबल वे टू adopted by Indian economy? That is the balanced approach, labor intensive technique as well as capital intensive technique. So today we have learned about the central problem of an economy and its various types, categories, the regions of central problem of the economy, of our economy, Indian economy, and the conceptual framework of all that with the help of example like that. And you see, you might have been aware about the applicability of the topics itself. Okay, all the best. Again we will meet in the next program. करने राहों को आलोकित करने, जीवन ये प्रकाशित करने, राहों को आलोकित करने, हम अपना दीपक स्वयं